we request a business consultant from London to come to our studio to discuss about the business and the various complication and implication that involve in the business. So, Ms. Abida Ghafoor, Assalamu alaikum. We welcome you on the show once again. Thank you. I welcome everybody too. How are you today? I'm very well, thank you. MashaAllah. Thanks for being here with us. नाज़रीन, बिजनेस एट 10 के हवाले से हम बात करते हैं बिजनेस की एक्सपेंशन, बिजनेस के रिवाइवल की और बिजनेस की डिज़ीज़ को डायग्नोज करके उसके इलाज करने की, उसको बेहतर अपने पैरों पे खड़ा करने की। वो बिजनेसेस जो मुतासिर हैं, अपनी परफॉर्मेंस से खुश नहीं हैं और दे आर थिंकिंग टू शट देम डाउन, उनके लिए एडवाइस है, उनके लिए जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं मिस आबिदा गफूर जो आती हैं हमारे साथ लंदन में। आज ख़ास तौर पे बिज़नेस के हवाले से जो हम बात करेंगे वो ट्रेनिंग, बिज़नेस में ट्रेनिंग की क्या अहमियत है इस मॉडर्न दौर में, इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में, इस मल्टी कल्चर सोसाइटी में जहाँ कस्टमर सर्विसेज बड़ी काउंट करती हैं और स्पेशलाइजेशन और एक्सपर्टीज़ ऑफ द एम्प्लॉईज़ एंड एम्प्लॉयर और सर्विसेज ये बड़ा काउंट करती हैं इन ऑर्डर टू विन द हार्ट ऑफ द कस्टमर एंड टू विन द लॉयल्टी ऑफ द कस्टमर। तो इस हवाले से ट्रेनिंग की बड़ी अहमियत है किसी भी बिज़नेस में और ख़ास तौर पर यूनाइटेड किंगडम और यूरोप में जहाँ के इनोवेशंस हैं और जो कस्टमर्स हैं, दे आर वेरी इन्फॉर्म्ड कस्टमर, वेरी एजुकेटेड कस्टमर एंड दे नोटिस ईच एंड एवरीथिंग, और जहाँ कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। तो हम ट्रेनिंग के हवाले से बात करते हैं और ट्रेनिंग के हवाले से हम ये बात करेंगे ट्रेनिंग किस तरह की होती है, कितने तरीक़ों से होती है और ट्रेनिंग के फ़वाइद क्या होते हैं और ट्रेनिंग ना करने के नुकसान क्या होते हैं कि आपकी इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट सिर्फ ट्रेंड स्टाफ ना होने की वजह से या प्रॉपर ट्रेनिंग ना होने की वजह से, एक छोटी सी गलती से, चूँकि गवर्नमेंट का प्रेशर बड़ा ज़्यादा है ट्रेनिंग के हवाले से, हेल्थ एंड सेफ्टी के हवाले से, कंज्यूमर प्रोटेक्शन के हवाले से, उनकी हेल्थ उनकी सेफ्टी के हवाले से, तो उनके गवर्नमेंट के कंसर्न बहुत ज़्यादा है। तो ट्रेनिंग अगर ना हो सही तरह से तो उसके बड़े नुकसान हो सकते हैं। और इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि व्हाट मस्ट बी कंसीडर्ड व्हेन यू डिसाइड आफ्टर ट्रेनिंग फॉर योर बिजनेस, व्हाट मस्ट बी कंसीडर कि जब आप ट्रेनिंग आपकी हो जाए, आपकी मुकम्मल हो जाए और बिज़नेस आप शुरू करना चाहते हैं तो क्या चीज़ें जो हैं बिज़नेस के बाद कंसीडर करनी होती हैं और व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग एन एक्सटर्नल ट्रेनिंग कंपनी। अगर आपके पास खुद नहीं है कोई ट्रेनिंग की सहूलियात तो एक्सटर्नल ट्रेनिंग कंपनीज हुआ करती हैं हमारे माशरे में, यहाँ सोसाइटी में, यहाँ बिज़नेस कम्युनिटी में, या कमर्शियल वॉल स्ट्रीट्स में या हाई स्ट्रीट्स में या ओवरऑल बिज़नेस इन्वायरमेंट के अंदर, बिज़नेस सेटिंग के अंदर यहाँ मुख्तलिफ तरह की एक्सटर्नल ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स कंपनीज़ हैं। और यूके वैसे भी मशहूर है हमारा यूरोप सर्विस प्रोवाइडिंग के हवाले से, तो हर तरह की सर्विसेज यहाँ मिल जाती हैं। मकसद सिर्फ बिजनेस एट 10 का ख़ास तौर पे ये है व्यूअर्स कि आपको इनकरेज किया जाए, आपको जनरल इन्फॉर्मेशन दी जाए कि आप बिज़नेस अपना कैसे स्टार्ट कर सकती हैं अगर आपके पास आइडिया है, आपके पास विजन है, आपके पास पैशन है, कमिटमेंट है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही कहाँ से शुरू करें। वो बिज़नेस आप स्टार्ट कर सकती हैं या आपका बिज़नेस आपका है, चल रहा है, दरमियाने दर्जे का है, मीडियम और स्मॉल साइज़ है, आप उसको एक्सपेंड करना चाहते हैं या उसके बिज़नेस की सेल इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो इस हवाले से आपको भी मालूमात फ़राहम की जाएंगी, जर्नल किस्म की मालूमात फ़राहम की जाएंगी। उसके अलावा आपका बिज़नेस था जो अब नहीं रहा और आप उसको रिवाइव करना चाहते हैं या बिज़नेस इस तरह का हो गया कि आप उसको बंद करने की सोच रहे हैं, तो कैसे मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट्स हो सकती है उसमें। इस हवाले से फेलो ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कंसल्टेंट हैं एंड मेंबर ऑफ द चार्टर्ड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है मिस आबिदा गफूर, ये हमें बताएंगी। प्लीज़ मिस आबिदा, व्हाट वी से अबाउट द ट्रेनिंग, द बेनिफिट्स ऑफ द ट्रेनिंग एंड हाउ इम्पोर्टेंट द ट्रेनिंग इज़ इन टुडेज़ commercial setting in our community, and you know very well the government is looking into the business to shut them down if they are not doing proper training or if they haven't hired a trained staff. So what do you say about it? First of all, I want to kick off today's subject with the old cliche, the old saying, you probably all heard it before, it's not what you know, it's who you know. And a lot of people used to think that 10, 15, 20 years ago, oh, you know, मैं किसी को जानता है, ज़रूरत नहीं है मुझे पता होना चाहिए ट्रेनिंग का, मैं किसी को जानता है, I'll carry my business on like that. That doesn't really work anymore. It is more like, especially in this marketplace where it's very volatile, a lot of consumers
you know, are much more educated. They're a bit more demanding. The economy is very fluctuating, and you know, people want to have a better customer service from a business. Exactly. They want to have, you know, qualified people behind them, knowing about their products, knowing about their services they provide, and want a highly skilled person serving them. So it's very, very important, you know, so we have to knock that on the head, like, oh, it's who you know, and you know, you don't really need to invest in training anymore. But in today's ever-evolving marketplace, you really need to train. You really need to invest in your staff. You really need to invest in your business to take it further. Training is an important part of a business, and it can help any gaps in your business. For example, improve your morale. It could employees development. It can improve your development for your staff, and also increase your business productivity, because if your staff are well trained, your productivity in your business will increase. So it's very, very important that, you know, we take a look at that very, very carefully. Also, it doesn't just build skills. Training is not there just to build skills and knowledge, you know, for your team. It's also helps improve companies, you know, benefits. For example, recruiting. It helps recruiting. So in today's environment at the moment, employees look for a business that does offer some kind of training, because if that puts on your CV, that carries more weight than the general package, like the company car, the phone, the laptop. As well as that, they want to know how they will want to get developed within the company, and it steads obviously better weight for your company and your business to offer these development programs. Not only will that give the employee a better qualified person who is serving your customers or giving, you know, the service to your departments, as well as that, it also makes them very, very knowledgeable and much more professional. We have found, when we obviously go around training people, we have actually found that it increases retention. And what staff retention is obviously keeping staff there. And we have found that companies that do offer training have loyal staff, and they're more likely to stay on longer with the company, because obviously they're being developed. So it does help your retention. Also, it's a better output. What we found is that training actually helps staff being, or your processes within your business and your structure of business, it helps it being more productive. People are much more enthusiastic. People are much more, you know, once they've had a training session, they're much more motivated. And also, you know, staff like to be knowledgeable. They like to gain more skills. So therefore, it's an, you know, great input. So right. Okay. Thank you very much for that. But a little bit told me just in my air that whatever you're talking about, the training people, we are looking to give the advice to those, or to give a general information to those who hasn't got that much capital to run their business. But asking for the training to the employees or to the business or the employer, it costs a huge money right now in the market. Yes. So how are they going to meet with their expenses and the cost that incur while training their staff or the employer, or meeting with other requirements, because we already lacking fund at the end of the day? Yes. So what alternative do you suggest for that? The most cost-effective way to train is perhaps maybe getting an external training company that will basically come in. They will fact find about your business, fact find about what your staff, have a view, an outlook on what you're doing as a business, find out where the gaps are, and also do a tailor-made program in-house for your staff and people. A lot of businesses run away from training, think, oh, you know, I'm not going to train my staff because, you know, it will take them away from their day-to-day duty. While they're training, I've got, you know, other stuff that's going on within the business. I can't invest any more time because I've got a production line going on, or I've got a shop front to serve. So that's really, really, you know, not the view to take at the moment, because at the end of it, you know, what you have as an output will be a much more motivated staff. They'll work much more effectively. So training helps
to motivate the staff in particular. Motivation जब तक staff में ना हो नाजरीन, जैसा कि आबिदा जी ने बताया, तो वो required और desired result achieve नहीं हो सकते. लेकिन कॉलर हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे बात कर लें. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. मैं यास्मीन बोल रही हूँ. काफी दिनों बाद मेरी बात हो रही है. जी जी यास्मीन जी, आपने पहले भी कॉल की थी यहाँ जी फर्स्ट प्रोग्राम में. फिर उसके बाद मुझे आबिदा जी का मैसेज मिला पर मैं कर नहीं सकी फोन. सही, अच्छा. तो अब ये कि प्रोग्राम खत्म होने के बाद मेरी इनसे बात हो सकेगी? जी हाँ, ये जनरल एडवाइस आपको दे सकेंगी. जनरल एडवाइस इंफॉर्मेशन जो भी, सॉरी जनरल इंफॉर्मेशन एक्चुअली, नो एडवाइस. तो आप कंट्रोल रूम से प्लीज़ रब्ता कर लीजिए इनके हवाले से और इंशाल्लाह बात होती है फिर. जी हाँ, ये यू रिमेंबर द लेडी? Yes, yes. She was the first caller of our That's right, from first Spain. program in the first episode. Yes. So is from no, she's not the. She based here in Manchester somewhere and looking to expand her business of catering. She's doing an in-house on a little or a small scale. That's right. Yasmin That's right. ji. Okay. Yes. Okay. So training. There is no doubt about it that training brings about a multitude of benefits to the businesses. But is there any possibility that people can get their training from the online or from the Google or through the website? Yeah. There's various ways and techniques of training in delivering training. In today's marketplace, you can have, like I mentioned earlier, an external trainer. You can have an internal trainer. Also, you can actually buy training programs online. You can actually do e-training. So it's very, very important that you actually, you know, investigate and have a look at what's available, what resources are available. So do you recommend going to the net or internet or the website in order to get the training of a kind of information in relation to the training, rather than going for the external training companies that cost a huge amount of the money and they can't afford at the moment, but later on they may, as soon as the business expands. But however, there is another caller. Okay. She got some question. Hello, अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. जी मैं यास्मीन जी, नहीं, मैं इधर ही हूँ. जी जी, अच्छा. मैंने इनसे ये पूछना था कि वेबसाइट कितनी हेल्प करती है आपके ये बिजनेस में? हेलो. How helpful जी? अस्सलाम वालेकुम यास्मीन. वालेकुम अस्सलाम. ठीक है. आप कैसे हैं? जी मैंने ये पूछना था कि वेबसाइट कितनी हेल्प करती है आपकी बिजनेस में? जिस तरह मैंने केटरिंग का किया हुआ है, मैं सोच रही हूँ वेबसाइट बनाने का, तो मैं वो ये पूछना चाह रही हूँ कि कितनी हेल्पफुल है. जी, वेबसाइट बहुत ज़रूरी है बिकॉज आप घर से केटरिंग कर रहे हैं एंड आपके पास दुकान नहीं है एंड ये आपका शॉप फ्रंट होगा, ये आपका बैनर होगा, ये आपका शॉप फ्रंट होगा, ये आपका सेल्स पर्सन होगा जो आपके प्रोडक्ट्स को बेच रहे हैं. सो यही चीज़ बहुत ज़रूरी है, स्पेशली आपके पास कोई पासिंग ट्रैफिक नहीं है, आपके पास कोई सेल्स पर्सन नहीं है जो आपकी सर्विसेज को आगे रेकमेंड करें आपकी फ्यूचर्स क्लाइंट्स को. सो अ वेबसाइट इज़ एसेंशियल फॉर यू. आपके लिए वेबसाइट बहुत ज़रूरी है. इफ़ यू वांट टू ग्रो योर बिजनेस, आपने बिजनेस को आगे लेके जाना है. सो इट्स वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. अच्छा ये बताइए आबिदा जी, वेबसाइट कॉस्ट कितना करती है, कितने इस पे पैसे लगते हैं और इसकी कितनी कॉस्ट आती है ओवरऑल एक मीडियम या स्मॉल वेबसाइट, नॉट दैट कलरफुल और अट्रैक्टिव, जस्ट अ नॉर्मल वेबसाइट? जी, वेबसाइट्स आपको बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगी. हर दूसरा बंदा वेबसाइट बना सकता है. मैं भी बना सकती हूँ, फहीम आप भी बना सकते हैं, कोई भी छोटा बच्चा भी बना सकता है. अच्छा. सो इट्स वेरी इजी. पैकेजेस मिलते हैं, स्टैटिक वेबसाइट्स मिलती हैं, ऑनलाइन वेब्स इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स वेबसाइट मिलती हैं. एंड द कॉस्ट ऑफ द वेबसाइट रियली डिपेंड्स. How long is a piece of string? So for example, they can start from anything from a couple of £100. I've seen banners outside in Manchester this morning that you can get a website for £125. But there are always hidden charges. What people do when they're offering cheap websites, or you know, it's usually the basic cost of setting up a website. You need to add on how much your domain name will cost you. You need to add on how many pages you want. You need to add on if you want an e-commerce site, if you want to sell and have a transactional site. You need to, you know, so it can vary from a couple of £100 to hundreds and thousands of pounds. So can we have another program for the viewers to
to give them a general advice in order to how to set up a website. Absolutely. And how to develop a website, because it is extremely important. Yes. In today's commercials activity, people tend to go to the net Yes. In order to find what they want or what they're looking for. Yes. So the e-commerce and electronic commerce on the local and domestic level. So Yeah. can we have another program? Of on course it? we can, and obviously, as we said in the past, if there is any topics, any questions that you want to cover, please do visit on the DM Digital's website and let us know, what you'd like to see and what you'd like to hear. So obviously, coming back from the feedback, inshallah, what we'll do is हम लेके आएंगे ये टॉपिक. व्यूअर्स, हमें आपसे ये शिकायत है, आबिदा जी को भी और हमें भी ख़ास तौर पे, कि आप हमारे ब्लॉग को विज़िट ही नहीं करते, DM डिजिटल की वेबसाइट पे नहीं जाते, कोई कमेंट्स नहीं, कोई फीडबैक नहीं. इसका मतलब ये है कि यू नॉट हैप्पी विद व्हाट वी डूइंग, बिकॉज जब तक आप हमें फीडबैक नहीं देंगे, हमारे ब्लॉग में नहीं जाएंगे, हमें बताएंगे नहीं कि हम हाउ वी डूइंग, तो हम उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते. प्लीज़ डू विजिट आवर वेबसाइट ऑन dmdigitaltv.co.uk website. Go to the Business at 10 or Good Morning Manchester, whatever, and please leave your comments. Or if you need any suggestion, if you go to the web, अगर आप जाएं वेबसाइट में या आबिदा जी के ब्लॉग में जाएं या Business at 10 पे जाएं, तो हम जो अहम प्रोग्राम्स हमारी गुजरे हैं उनकी समरी हमने वहाँ बता दी हुई है आप लोगों की सहूलत के लिए, कि अगर इन केस मिस हो जाता है तो आप वहाँ से ले लें. और मज़ीद कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ वहीं से पूछ लीजिए, आबिदा जी से पूछ लीजिए, उनकी वेबसाइट ब्लॉग में चले जाइए और वहाँ से हमें बड़ी खासी हेल्प होगी. जी फरमाइए. हम अभी बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि क्या कंपैरिजन है एक्सटर्नल training company ka and also online training company ka. Shall we go externally and get a consultant coming in to develop a tailor-made training program, or shall we actually go online and book an online course? And you probably hear the old saying is, for example, I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand. So without you physically going through the motions of having an in-house training program, you could go online and read and explore and develop yourself, but it's not as effective as, for example, if you hear something, you forget it. If I see it, I remember it. So, what you retain from your programs, what research has told us is, it's much more effective to have somebody obviously come in. And you as a business need to invest, because this is where your future growth is. Exactly. So in training, yes, you mean to say, right? Okay. तो नाजरीन, ट्रेनिंग के हवाले से आपका कोई भी सवाल हो कि ट्रेनिंग किस तरह कारआमद और मुफीद है, किस तरह से वो फ़वाइद लेके आती है, जैसे आबिदा जी ने बताया कि ट्रेनिंग बिजनेस के अंदर जान डाल देती है. ट्रेनिंग एम्प्लॉयर की हो चाहे एम्प्लॉईज़ की हो, वो इंतहाई अहम है आज के दौर में, कि जब के मुख्तलिफ तरह का हर तरह से कंपटीशन है, मार्केट सर्विस प्रोवाइडर से भरी हुई है, कोई भी मार्केट हो, तो लोग नोटिस करते हैं एक छोटी सी भी कबाहत को या एक छोटी सी भी पॉजिटिविटी को या अच्छाई को, और वो ट्रेनिंग जो ट्रेंड स्टाफ और क्वालिफाइड स्टाफ जो है, वो ना सिर्फ आपको एक ह्यूज कॉस्ट जो आपको पड़ जा सकती है आपकी नेग्लिजेंस की वजह से या अनट्रेंड स्टाफ की वजह से, उससे ट्रेनिंग आपको बचाती है. और अगर एम्प्लॉई से कोई गलती हो गई है और उसकी वजह से खासा नुकसान हो गया है, और अगर आपने साइन लिए हुए हैं ट्रेनिंग से, एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉई से, एम्प्लॉयर ने, कि जनाब इनको तो ट्रेनिंग दी गई हुई है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ जो है या जो क्वांटम ऑफ डैमेजेस जो है वो एम्प्लॉयर से तो खासा कम हो जाएगा. तो ट्रेनिंग इंतहाई ज़रूरत है, आज की अहम ज़रूरत है. इससे स्टाफ मोटिवेट होता है, इससे बिज़नेस एक्सपैंड होता है, इससे आप नई स्किल सीखते हैं, इससे अपने बिज़नेस को आप एक्सपैंड कर सकते हैं. इसके अलावा इसमें आप अपनी लायबिलिटी से बच सकते हैं, और सबसे अहम बात, आप गवर्नमेंट के रूल एंड रेगुलेशन से कंप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जो रेगुलेशंस होते हैं, गवर्नमेंट के रेगुलेशंस या बिज़नेस रेगुलेशंस या मार्केट रेगुलेशंस, उनसे कंप्लाई करना खुद एक बहुत बड़ी इबादत भी है, और उससे सारी जिम्मेदारियां माशरे की जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक आइडिया है कि सबकी तरक्की को लेके चलो, सबका ख्याल करो, इकनॉमिकल स्टेट सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
وہ سیٹسفائی ہوتی ہے اور پھر برکت آتی ہے بزنس میں اور پھر گورنمنٹ بھی انکریج کرتے ہیں اور بہت سارے ریوارڈز بھی ہیں اس کے. جی عبدہ جی, what else would you like to say? What must be considered when you decide after training for your business? What must be considered? It's very important to consider, for example, when you're offering training for your business, the following things, you know, first question to ask is it going to be in-house or is it going to be external? So training ہم خود ہی اپنے premises میں کریں گے یا اپنے management staff سے خود کریں گے یا ہم externally کسی کو باہر سے لے کے آئیں گے جو اپنی ایکسپیرینس اینڈ ایکسپرٹ جو لے کے آئے اینڈ وہ ٹریننگ پروگرام ڈیولپ کریں ٹیلر میڈ جو ہماری بزنس کے لیے. آلسو کنسیڈر کرنا چاہیے جو کاسٹ آف ٹریننگ. سو جو ہمارا خرچہ کیا ہوگا ہمارا اسٹاف کو 2 دن 1 دن آدھا دن 1 گھنٹہ 1 ہفتے کے لیے آف دا روڈ آف دا شاپ پریمیسز آف دا فیکٹری فلور ان کو کتنا خرچہ لگے گا یہ ٹریننگ پروگرام کو ڈیولپ کرنے کا. سو یو ہیو ٹو ریلی کنسیڈر دا کاسٹ از ویل. دا اسپیس آف دا ٹریننگ آپ کے آفس میں یا اپنے پریمیسز میں ہے اسپیسز آپ کو جگہ ہے ٹریننگ کے لیے آپ کے پاس اکوپمنٹ ہے. سے فار ایگزامپل آئی ٹی ٹریننگ ہے آپ اپنے اسٹاف کو آئی ٹی ٹریننگ کرنا چاہتے ہیں. ہیو یو گاٹ دا فیسلٹیز ان ہاؤس؟ Yeah, so you need to consider these key elements as well as kitna time lagega, how much time is this going to take to actually get your staff fully trained. Right, okay, there is a time for a short break. Okay, and we just come back after the short break and then we discuss how much it is how long does it take to get your staff fully and completely trained. ٹھیک ہے ناظرین, ہوتی ہے ملاقات بریک کے بعد اور پھر بات کریں گے ہم اس حوالے سے کہ کتنا ٹائم لگتا ہے ایک امپلائی کو اپنے اسٹاف کو ٹرین کرنے کے لیے. ہمارے ساتھ رہیے گا. What the hell, man? You destroyed my car, man. You stopped too suddenly. Your fault. Why don't you accept it? You Your stopped fault. too suddenly, alright? یہ کیا کر رہے ہو؟ دوست کو فون کر رہا ہوں. ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور تمہیں دوست کی پڑی ہے. یہی دوست ہے جو اس وقت کام آئے گا. ہیلو, ٹرپل اے کلیمز, ہمارا ایکسیڈنٹ ہو گیا. Don't worry, sir. We provide car recovery service, replacement vehicle for private and taxi use. We also deal with personal injury claim and you get 100% compensation on no-win, no-fee basis. Triple A claim. ہر سال بکرے مہنگے ہوں اور منڈی کے چکر سہنے ہوں, کچھ قربانی سے بڑھ کے کرنا ہو, ضرورت مندوں کا خیال بھی رکھنا ہو تو آزمائیں سرکل آف لائف کی قربانی یا صدقہ فار لائف اسکیم. ضرورت مندوں کی مدد میں ساتھ آئیں اور ہر سال بکرا مفت پائیں. پیسے دیں صرف ایک بار اور یہ بلا بلایا اور صحت مند بکرا ہم آپ کے دروازے پر پہنچاتے ہیں یا آپ کی خواہش پر قربانی کر کے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دیتے ہیں. سرکل آف لائف چلتا رہتا ہے, ضرورت مندوں کا کام بنتا رہتا ہے. سرکل آف لائف کی قربانی یا صدقہ فار لائف اسکیم. ضرورت مند خوشحال, صدقہ بے مثال, بکرے آپ کے ہر سال. Islamabad Grill, Winslow Road, Manchester. Lunch buffet £4.99. Evening buffet only £7.99. کھائیں, خوب کھائیں اور کھاتے ہی چلے جائیں. صرف اسلام آباد گرل پر 01612573890. Kesar Jewelers, the best gold buying center of the north. If you want to sell your unwanted gold, don't miss this opportunity. We offer the best rates for market, same time payment. Kesar Jewelers. Telephone number 01274 733 851, 8991 Bartaby Road, Bradford. Brought to you by
Gata Cars Tours and Travels. The Solomon Partnership LLP Solicitors. रीगल स्वीट्स एंड स्नैक हमारे यहाँ आला किस्म के केक और मिठाइयाँ दस्तयाब हैं। हमारा दावा है कि हमारे यहाँ 100% देसी घी से मिठाइयाँ तैयार की जाती हैं। केक, आइसक्रीम, फालूदा, समोसा चाट, दही बल्ले, मिल्क शेक भी दस्तयाब हैं। हर हफ्ता इतवार को हलवा पूरी का खसूसी एहतमाम, तो आज ही तशरीफ लाइए। रीगल स्वीट्स एंड स्नैक्स, 15 किंग एडवर्ड्स बिल्डिंग, बड़ी ओल्ड रोड, सालफर्ड, M7 4QJ। जी आबिदा जी, जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आबिदा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और इनसे फिर हम सवाल करते हैं, ये जो इल्म का ख़जाना रखती हैं और वो अपने अवाम को, अपने लोगों को, अपने व्यूवर्स को लंदन से देने आती हैं, इनके लिए दुआ कीजिएगा। और अब ये बात करेंगी आबिदा जी, बात करेंगी ट्रेनिंग के हवाले से और ट्रेनिंग के सक्सेसफुलनेस के चांसेस कितने होते हैं और ट्रेनिंग कितनी तरह की होती है। हाउ मेनी काइंड्स ऑफ training that are available for the businesses, the variety, the range of trainings. Yeah, there are many types of trainings available for businesses, and how they're developed is, for example, you know, if you get somebody external coming in to get a need, so you need a training need. For example, you know, if you are running a business, आपको देखना पड़ेगा हमारी business में क्या कमी है, हमारा staff शायद इतना कस्टमर सर्विसेज नहीं दे पा रहा है, हमारे कस्टमर ज़्यादा कंप्लेन कर रहे हैं, नॉलेज नहीं है स्टाफ को, हमारी सेल्स कन्वर्ट नहीं कर रही। सो आपके पास एक प्रोडक्ट है एंड आप कह रहे हैं ये हम तो एडवर्टाइजिंग की इंक्वायरीज आ रही हैं, हमारे पास हम बजट लिखा है एडवर्टाइजिंग का, हम स्पेंड कर रहे हैं, हम हर चीज़ मार्केटिंग में कर रहे हैं, हमारी इंक्वायरीज भी आ रही हैं पर वो इंक्वायरीज हम कन्वर्ट नहीं कर रहे। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक क्लाइंट था जो मैंने उनके साथ काम किया था एंड उसकी कंपनी क्या हो रहा था कि वो काफ़ी बजट उसने अपना रखा था एडवर्टाइजिंग में एंड उसकी हर वक्त उसका फ़ोन चलता था, मेरे सामने भी बार बार उसका फ़ोन चल रहा था। फिर मैंने कहा कि कह रहा था कि ओह ये फ़ोन तो आ रहे हैं पर बिज़नेस नहीं बन रही। सो मैंने ऑब्वियसली देखा एंड क्या ये कर रहे हैं एंड क्या होता था कि उनकी टेलीफोन काफ़ी अच्छी बिज़नेस थी पर उनकी टेलीफोन आंसर मशीन में वो इंक्वायरीज़ कन्वर्ट नहीं हो रही थी एंड हमने इवेल्युएट किया था, हमने देखा कि वो इंक्वायरीज जब आ रही थी लोग बस सवाल पूछ करके फ़ोन नीचे रख देते थे एंड वो मेरे सामने एक फ़ोन आया, फिर उसने बस कहा हेलो, अपनी कंपनी का नाम बोला, फिर कहता है कि यू नो, फिर मैंने उसको पहले ये फर्स्ट पॉइंट नोट किया है कि जब आपके प्रोस्पेक्टिव कस्टमर आपके बिज़नेस में फ़ोन कर रहे हैं उनको यू हैव टू स्पीक इन योर कंपनी नेम, आपके कंपनी का नाम आप बोले, फॉर एग्जांपल दिस इज़ फ़हीम फ्रॉम DM Digital, how can I help you, and ये courteous होता है। Exactly, very right question, very right suggestion. Yes. लेकिन एक और कॉलर हमारे पास लाइन पे मौजूद है, इनको ले लेते हैं जी। और इसके बारे में फिर आप ये बताएंगे कॉलर के बाद कि पूरे पैकेजेस हैं ट्रेनिंग के, हाँ, कस्टमर सर्विस, yes, उसके अलावा दूसरी सर्विस। Yes. Okay. हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या हाल है आपके मोहतरमा? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का जी। आप क्या सवाल करना चाहेंगी? मैंने ना वो आयरनी की बिजनेस खोलनी इधर स्कॉटलैंड में ना, वो लड़कियां पाकिस्तान से आई हैं शादी करके तो बहुत अपसेट हैं। मैं उनके लिए ना छोटा सा बिजनेस करना चाहती हूँ। कल मैंने गई थी जॉब सेंटर वालों ने, उन्होंने कहा कि आपको ग्रांट देंगे, तो अच्छा, मैं ये छोटा सा जॉब करना लगी हूँ। तो मैंने पूछना था आबदा जी से तो कैसे करूँ, क्या करूँ, लेकिन मेरे पास कस्टमर बहुत है, मैंने ऑल्ट्रेशन करनी है, थ्रेडिंग करनी है, इधर कोई नहीं है, और आयरनिंग करनी है। वो मेरे हॉस्पिटल भी नज़दीक है, पोलो राइड वाले, आलता, जॉब सेंटर, हेल्थ सेंटर, ये सारे कह रहे हैं कि हम मियाँ बीवी काम करते हैं, हम स्त्री कपड़े की ज़रूरत है। जी जी।
तो वो मैंने आबिदा जी से बात करनी थी कि कैसे सेटअप करूं। वाह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। चलो, आप बिजनेस में क्या आप क्या करना शुरू करते हैं? इट्स मैं मेरी शादी हुए इधर 35 ईयर हुए हैं, तो मैं काम कर रही थी होम ये सोशल वर्क डिपार्टमेंट में। तो अब मेरे बच्चे बड़े हो गए, ग्रेजुएटेड, तो मैंने छोड़ दिया है। तो अब जो लड़कियां आई ना पाकिस्तान से यहाँ शादी करके, वो सारा दिन घरों में बहुत अपसेट हैं, बोलना नहीं आता, तो वो मेरे पास आती हैं। तो मैं उनके लिए बिजनेस सेटअप करने लगी हूँ। लॉन्ड्री, वो जो आयरनिंग नहीं होता, अच्छा, लॉन्ड्री सर्विस? नो लॉन्ड्री, जस्ट आयरनिंग सर्विस। यस, हाँ जी। वो ऐसे करते हैं ना कि वो डॉक्टर और जितने लोग होते हैं वो अपनी कोई ड्रॉप कर देते हैं, तो कईयों के लिए हमें डिलीवरी करनी पड़ती है। लड़कियां मेरे पास होंगी 3-4, क्योंकि इधर किया लोगों ने तो बहुत जा रहा है, क्योंकि आजकल मियाँ बीवी काम करते हैं तो वो कपड़े इस्त्री करना पसंद नहीं करते जी, टाइम ही नहीं होता। इसलिए मैंने यूनिट लिया, इधर मैंने यूनिट लिया है। तो कल मैं गई थी जॉब सेंटर वालों के पास, तो मेरी अपॉइंटमेंट थी, तो उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर लिया। वो कहते कि 3 महीने के लिए हम आपको ग्रांट देंगे जी, तो उसमें से आपने चलाना है। तो अगर आप पैसे बने फिर भी आपके अगर लूज हुए तो फिर भी कोई बात नहीं है, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो अब मैंने छोटा सा रिस्क लेना चाहती हूँ। मैंने छोटी सी थोड़ी सी एक स्टैंड से शुरू करना चाहती हूँ, 2 से जी। तो लेकिन फिर इसको बिल्डअप करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे पास लड़की है, मशीनिस्ट है, और थ्रेडिंग वाली, फेशियल वाली ये है, वो बेचारी घर में बैठी परेशान, डिप्रेस, तो मैं उनको बाहर निकालना चाहती हूँ जी। तो वो इसलिए मैंने आपसे एडवाइस लेनी थी कि मैं कैसे कैसे करूँ, क्या करूँ। चलो ठीक है। एंड आपको मैं ऑब्वियसली ये पूरा प्रोग्राम में पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आप अपना कंट्रोल रूम से अपना नंबर दे जी। सो उसके अलावा हम इनकरेज करते हैं, बहुत अच्छा आइडिया। आपको इनकी बात तो समझ आ गई है ना कि अब ये एक तो इन्हें ग्रांट मिली है कि आयरनिंग का बिजनेस करना चाहिए। दूसरी अहम चीज़ जो है, इनके पास खवातीन आया करती हैं जिनकी नई नई शादियाँ होकर यहाँ आई हैं जी, उनको ज़ुबान का प्रॉब्लम है, थोड़ा सा यानी कम्युनिकेशन बैरियर्स हैं, कम्युनिकेशनल बैरियर्स हैं, उसकी वजह से वो थोड़ा सा अपसेट हैं। तो इन्होंने ग्रांट भी इनको मिली है, एक तो कौंसिल की तरफ से या होम ऑफिस इनकी अपना जॉब सेंटर वालों की तरफ से कि जी आप, इन्होंने आइडिया दिया उनको अपना, और वो ये कह रहे हैं कि ठीक है आपका आइडिया बहुत अच्छा है, हम आपको ग्रांट देते हैं। अब ग्रांट में लोन नहीं होता, ग्रांट होती है, गिफ्ट होता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि प्रॉफिट हुआ तो वो भी आपका, लॉस हुआ तो वो हमारा, बिल्कुल, इट डजंट मैटर, लेकिन आपका आइडिया अच्छा है, आप कोशिश करें और इसको एक्सपैंड करें जी। तो जी एंड वो ग्रांट देते हैं, सबको नहीं देते, वो देते हैं एलिजिबल आइडियाज के ऊपर, एलिजिबल आइडियाज, उस मार्केट में डिमांड क्या है। एंड यू नो, एंड ये बहुत अच्छी बात है कि इट्स नॉट ओनली जो आंटी जी जिसने फ़ोन किया है वो भी नहीं है बेनिफिट करेंगी, वो जो और ख़वातीन जो हैं, कम्युनिटी भी है, पूरी कम्युनिटी भी बेनिफिट विल बी बेनिफिटेड विद दैट स्टफ। एब्सोल्युटली। सो ग्रांट्स ये काफ़ी मिलती हैं, बट आपको जस्टिफाई करना पड़ता है ऑब्वियसली टू द लोकल अथॉरिटी कि ये हमारा बिजनेस आइडिया है, हमको कैसे सपोर्ट आप करेंगे। सो उस ऑब्वियसली उसमें बिजनेस प्लानिंग की बात शुरू होती है, बिजनेस प्लानिंग करना चाहिए, एंड देन उसमें ओबियसली सेटअप का कॉस्ट होता है, रनिंग कॉस्ट होता है। Exactly. So it's very good to hear. It's very good to hear कि हमारी औरतें आगे ये सोचती हैं कि obviously rather than sit at home, get depressed, we don't know what to do, let's go and start something. और ये बहुत अच्छा आइडिया है, बहुत छोटे से पैमाने पर। हाँ। Isn't it? ये सबको जरूरत है। आजकल वो बिल्कुल सही कह रही थी कि किसी को टाइम नहीं है। And ironing even for me is the worst job. You know, I rather do anything else. So it's very time consuming, and people don't have that. People don't have that. Exactly. And you, even though if you do it, you are not satisfied with that. You've done it properly. No. Isn't it? No, absolutely not. That gives more headache than not doing it. Yes. सही। तो आबिदा जी, हम बात कर रहे थे इससे पहले कितने किस्म की ट्रेनिंग होती है जी, how many kinds of training are there, और then we talked about the packages, the whole packages of the training. Yes. Call answering manners, customer service manners. So, and then supplier dealing, how to speak to the suppliers. Absolutely. And to the buyers, and to the banks, and to the creditors or investors. Yes. Or whatever. So many things. So how do we do that? There's
there's training for every single job function, everything that you do. Obviously you can improve with training. You can always improve. पहले होता है कस्टमर सर्विसेज ट्रेनिंग होती है, एंड उसमें क्या होता है कि कस्टमर सर्विसेज ट्रेनिंग में होता है कि कैसे आप टेलीफोन कॉल्स डील करें, कॉल सेंटर्स में या अपने ऑफिस में, अपने लिसनिंग स्किल्स क्या है. हमारा क्या प्रॉब्लम होता है, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होता है कि वो ज़्यादा बात करते सुनते हैं, not a very good listening. So वो जो listening skills वो develop कैसे करते हैं, and you know inquiries कैसे log करते हैं, inquiries कैसे handle करते हैं, अपने future customers को कैसे deal करते हैं, अपने existing customers को कैसे contact करते हैं. So customer services training ये भी एक training होती है. बहुत अहम training है, very important. Also मैं वो caller से पहले बता रही थी कि sales training. And sales training is very very important because हर business service में sales होते हैं. You still have to sell your services. You still have to sell your concept. You still have to sell your products. So every business has a sale role in it. Now, in the sales training, for example, what can be covered is how to deal with your inquiries, how to make appointments. So आप कोई बिजनेस में है कि आपने बाहर जाके कॉन्ट्रैक्ट्स लेने हैं, अपने कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स लेने हैं, वो कैसे अपॉइंटमेंट्स बनाते हैं, वो कैसे कांटेक्ट करते हैं जो बिजनेस डिपार्टमेंट्स को, फाइनेंस डिपार्टमेंट्स को, मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स को. प्रेजेंटेशन स्किल्स क्या है, अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, अपने प्रोडक्ट को डेवलप करने के लिए, अपने प्रोडक्ट को आगे लेके जाने के लिए हमको प्रेजेंटेशन स्किल्स चाहिए. कैसे 100, 200, 10 बंदे, 5 बंदों के सामने आप कैसे अपने प्रोडक्ट्स को या कैसे आपकी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं. बिकॉज डिमांड बहुत है, वो देखेंगे कैसे वो बंदा प्रेजेंट कर रहा है अपने प्रोडक्ट. आपके अंदर पैशन नहीं है, एंथुसियाज्म नहीं है, वो बहुत मुश्किल है आपका प्रोडक्ट आगे बेचने के लिए. जय नाजरीन, अगर पैशन नहीं है आपकी प्रोडक्ट के बारे में, उस पर बिलीव नहीं करते, उस पर ट्रस्ट नहीं करते, तो वो आगे नहीं जा सकती. ये कहा आबिदा जी ने. इसके बारे में मजीद गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक कॉलर हमारे पास है मौजूद, उनको खुशामदीद कहते हैं, वेलकम कहते हैं. हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. हेलो, वालेकुम सलाम. कैन यू हियर अस? Yes, we can. Yeah, please go on. Yes, I can. What's your name, sorry? Hello, my name is Shireen Khan. Right, okay, Shireen Khan. Thank you for calling. So, do you want to speak to Miss Abida? Hello? Yes, please. Yeah, please go on, we are listening. She's there, she's listening. Can you... Yes, I have a question for Abida Khan. Sorry, Abida Ghafoor. Mm-hmm. Hi. Can you please turn your volume down, your TV volume, please? Hello? Hello, yes, done that. Hello? Yeah, please Hi, go on. We can hear you. How are you? Hello, Abida, yes. I'd like to ask you a question. Yes. Which is for mothers who have sent all their children to school and now they have nothing to do. Are there any courses that we can go on to actually get back into the working life? I've been off work for 7 years now, so I'd like to ask if there is anything out there for us. Okay. Possibly to start a business or anything that would help us to get back in there. Yes. Shireen, first of all, I must say I take my hats off to you for raising your children, and you're left like redundant, thinking, what shall I do? Shall I keep myself busy? What ideas that obviously I can develop in terms of it's probably not more so to generate money. It's probably more so doing something for yourself. There's many opportunities, many courses, many government-funded schemes that you can actually take on board. There's a lot of franchising companies that are available, that are running very successfully, that a mother can work from home,
you know, somebody like yourself can actually go ahead and you know, get enrolled. The first question is obviously to ask yourself is what are you interested in, and then obviously you need to work backwards and develop a program for yourself in how I can set this business up, and obviously with the business plans, with the marketing strategy, you know, you can really go ahead and run with your idea. But the first and most important thing is what you would need to do is obviously develop something that would work and give you your work-life balance, where you can actually spend time with your family as well as running a business from home. But there's many ideas, Shireen. There's many ideas that you can actually go ahead and do. You know, you've got the children's industry. So, for example, you've got a lot of businesses, a lot of opportunities that you can work with children, entertainment, children's entertaining. You can do decorations, you can do party promotional stuff, you can have a salon. You know, so it really depends. First of all, the first question to ask is, you know, what are you interested in? Yes, I mean, I'd actually like to. Sorry. Carry on. I mean, I would like to actually start my own business, but I'm not quite sure how to get back out there. In what ways? So in terms of who to contact? Yes. Okay. First, she needs My first port of call, what would that be? Your first port of call is to find out what the demand is, and what are you thinking interested of in? Yeah. Yeah. What your area of interest? My interest is actually in the entertainment, you know, like party and events. Coordinator. Okay. First of all, what I would do in that, there's a great market. Is this for children, adults, or? It's for both. It's to cover both. So you'll have some corporate work, and you'll have obviously children's entertainment as well. So an entertainment agency. That's right. Yeah. Okay. What your first port of call would be is to find out who your competitors are in your area. Right. So whatever area that you actually are living in, you need to find out who else is offering this service. Market research. You've got to do your market research and who your competitors are, and then work out a plan that what you could offer differently and how you can offer it, and how you're going to obviously demonstrate to the people in the area that, you know, they should come to you, not somebody else. Because, you know, I'm sure there will be a few agencies in your area, but you need to first of all look at who your competitors are, and look at, you know, do a bit of market research, as Faheen said. Have a look at, you know, and perhaps maybe get a few questionnaires out, perhaps at schools. Yeah, which I've already actually, I've started to do that. Good. Okay. But the only thing is now, I'm afraid to take the next step. Okay, you mustn't. First of all, I think it's a bit of a confidence. You mustered up your courage. Yeah, you should pluck up the courage, go out there, set your company up. Whether you set up a limited company or be a sole trader in the first few years, that's entirely up to you. But, you know, what you must do is get perhaps some leaflets out. Just get a feel, slowly, gradually, of what people want in your area. So what I'd suggest is perhaps maybe get a few flyers out. You know, you've had questionnaires come back, so there is a demand. Just do a few very local advertising, get your website set up, and then, you know, be ready to take on the inquiries. I think once, it's very difficult, and I suppose, you know, you've been out of the marketplace for, you know, you mentioned 7 years. Yes, so it's very important. It's a long time. Yeah. And, you know, you need to, you know, obviously go out there and invest in some advertising, and perhaps maybe after that you'll get a better, you'd get more confident in terms of, you know, how to deal with your customers. Inshallah. Okay. And we wish you very good luck with your business as well. Yeah, best of luck. Thank you. And keep it up. Thank you. Isn't it? Thank you. So Abida ji, this is how our people are talented, just because of barriers and the shortcomings that they normally feel. They couldn't stand up, but they got the potential, they got the abilities, they got everything that require for a successful businesses. So we just left not more than 2 minutes. Would you please like to say anything, summary or wrap up?
Anything kind of trainings? Yeah, just coming back on our training subjects, before I sort of come back, I think you've hit the nail on the head, really. A lot of people are perhaps very nervous in terms of dipping their toe into the water. Exactly. And you know, unless you go ahead and do it, you'll never know. Exactly. And after speaking to a lot of businesses, they say, I wish, and you always speak to business owners, I wish I started this years ago. मैं काश मैं पहले हाँ वक्त का पहिया पीछे चला जाए। हाँ, मैं पहले शुरू करता या करती, कितना और मैं आगे जाता। बहुत आगे जाता। So it's very important that the moment is now, and you know, unless you don't try, and you don't go forward, and there's nothing to be afraid of. Exactly. Because the worst thing ever is a fail. It's a fail. So if you fail, fear of fail. Yes, fear of fail. Exactly. So the worst thing ever is, you know, you're not going to succeed, but the benefit of that is that you're going to learn from it. A lot. You're going to learn from it, and then you give pick it a go. Isn't it? Give it a go. And there's a lot of businesses now that you find that they open one business, it's not successful because of various aspects, various elements, but they get up and they have an idea and they develop it further. So you know, a lot of people who are in Shireen's situation exactly. where their children have all grown up, they don't know what to do. There's a big opportunity for you, and you know, everybody has an inner talent in them. Everybody has, you know, something that they can develop and get themselves, you know, developed and trained for whatever they want to pursue in their future careers. Ms. Abida, please accept my heartfelt gratitude for being here with us, just in order to educate and to inform our community. Yes. It's a great service, and God bless you for that. Thank you so much. Thank you very much for that. जी हाँ व्यूवर्स, बिजनेस एट 10 के हवाले से हमने बात की ट्रेनिंग की अहमियत से, और ट्रेनिंग की अहमियत से क्या फ़वाइद और उसके ना करने से क्या नकाइस हैं। जो लोग भी बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उनको हम बेहतरीन सी जनरल एडवाइस देंगे और जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे। और सबसे पहले जो आज हमें नज़र आया वो ये चीज़ थी कि अपने इंटरेस्ट को कुरेदें कि आपके अंदर इंटरेस्ट क्या है, आप क्या बेहतर कर सकते हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है। और इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करने के बाद मार्केट रिसर्च करने के बाद कि भाई मार्केट रिसर्च से मुराद ये है कि आप ही की तरह के सिमिलर बिजनेस और कितनी तरह के हैं आपके एरिया में या शहर में, और फिर उनकी प्राइसिंग स्ट्रेटजी क्या है, वो क्या कर रहे हैं, क्या ऑफर कर रहे हैं, उसमें क्या कमी है, आप उसमें क्या बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं कि आपको फ़ायदा हो। और मार्केट रिसर्च करने के बाद स्टेप लें, फॉर्मुलाइज करें अपने आइडियाज़ को फॉर्मुलाइज करने के बाद बिजनेस प्लान लेके आएँ, बिजनेस प्लान करने के बाद अपना सेटअप करें कंपनी, और कंपनी सेटअप करने के बाद ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ, और अगर आपको खुद भी ज़रूरत है तो ट्रेनिंग लें, उससे बड़े फ़वायद होंगे। अगले प्रोग्राम में इंशाअल्लाह वेबसाइट डेवलपिंग के हवाले से हम बात करेंगे कि ऑन योर ओन आप कैसे वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, और आबिदा जी से पूछेंगे ये जो इन्होंने कहा कि बच्चा भी वेबसाइट डेवलप कर सकता है तो कैसे। अगले फ्राइडे के लिए हमें इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। जुमा मुबारक हो। हमारी वदा अल्लाह मियाँ से दरख्वास्त है कि अल्लाह मियाँ हमारी कोताहियों और कमियों को कम करे और हमें तौफीक दे कि हम अपना और अपने हमसायों का, अपने रिश्तेदारों का, सबका ख्याल रख सकें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।